Okay. Hi, Chinmay. So, Hello. uh, this time I want to talk to you about first if we can get a bit more clarity on if there's somebody now that they have decided that they want to pursue their career in the armed forces in general. So, what happens like after the CDS examination till somebody who ends up joining one of the armed forces, if you can. Right. So basically, there are two type of entries in the armed forces. One is your written entry, and another is your direct entry. So for 12th, after 12th, if you want to join, then NDA is the one, and your TES is another one. So TS is the entry which does not have any written exam. And similarly, after your graduation, you have again two options. Either you can go from the written part, which is the CDS or the AFCAT. So AFCAT is the Air Force Common Admission Test, and or you can go from direct entries. So direct entries are based on your qualification. So generally for engineers there are a lot of options, and for lawyers there are options. So direct entries are where you can skip the written part and directly go for the SSB. So after you have cleared the written or maybe through your direct entry, the main part and the most interesting and the difficult part of joining is the SSB, so which is the Services Selection Board. So now, as I had mentioned earlier, a little part of it. So SSB is actually a 5 day process. It's we cannot call it as an exam per se, because it's kind of a test which goes for 5 days. And the reason why I'm not calling it as an exam is because I'll tell you how it goes. So on the first day, there is something called a screening, and it is divided in four parts. So one is your officer intelligence rating. There's a basic aptitude test. That's very easy. Anyone who has some some brain and some of it is working, you can clear it. Uske baad is your PPDT, something called as a picture perception and discussion test. So in which you're shown a picture, you have to write a story on that picture in about 4.5 minutes, and then you have to discuss it in a group and maybe come to a conclusion and all. So basically, your psychology is checked. In when you write a story on any random picture which is given, your psychology is checked. Now, once you get screened in, then there is another 4 days which you have to spend in the SSB. So SSBs are conducted at many places in the country. There are, I think, 4 places for Army, 5 for Air Force, and another 4 for Navy. So roughly about anywhere you would be called. And once you go there, once you get screened in, then the next part of your test is the psychology test. So as I mentioned earlier, the Mansa Vacha Karmana. So psychology is your man, basically what you think, what thoughts you have inside. And though the tests are designed in such a way that you cannot fake it. So they are so extensive and they happen so quickly that even if you think कि मैं ऐसा लिखूंगा तो तुम लिख नहीं पाते हो, क्योंकि as I said, one after the other there will be 12 pictures which are being shown to you. On every picture you have to write a story in about 4 minutes. And once you write the story, then there is another test which is your word association test. So you will be shown a word for 15 seconds, and in that 15 seconds itself you have to think and write a sentence on it. And then there is situation reaction test which goes for 30 minutes, and in 30 minutes you will be given 60 situations. Those situations can be simple decision making, you can say something where decision making is involved, or it can be a crisis situation as well. Like it can be written that you are going to your office, you are already late for your meeting, for a very important meeting, and you see an old lady lying on the road because of some accident or whatever, and what will you do, or like kind of such situations. So this I'm telling you in very I would say concise manner, but there can be situations which are very descriptive as well. So, and then there will be situations where you have to choose, you have to prioritize things. So it can be a situation, a very common situation is where they tell you that you have an interview at a very big MNC. On the same day, your sister is getting married, and you also have your SSB on the same day. So what will you do? So you have to choose between these three. Now, someone going for the armed forces interview might keep the corporate interview as the last option, but then you have to choose between your sister's wedding and SSB.
So then how you handle that situation? Now, can you do both? Can you do both on the same day? So you can't, because SSB reporting you have in the morning 6 a.m. So, so you have to think of some smart way to deal with the answer so that you don't miss out on the most important family function. Plus, you also don't miss out on SSB. So, kind of, you will have to write something. So, such 60 situations are there. You are given 30 minutes, so roughly about 30 seconds for a situation, and you have to write that. And then there is a self description test where another 5 questions are asked about you. Ki, what do you think of yourself? What do you think that your parents think of you? What do you think your friends think of you? Then what do you think your colleagues or your classmates think about you? And then what do you want to become or improve? So, those 5, 6 questions are there where you have to write a description about it. So, this is the psychology test. It goes for around 2.5 hours. And as you can imagine that in this 2 hours, if you feel कि तुम्हें fake करना है तो तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि 15 seconds में तुम क्या ही सोचोगे. I mean, if the word is table, तो तुम टेबल पे ऐसा क्या लिखोगे कि तुम दूसरे को impress करोगे. So you will write your original thought, है ना? And the words can be as simple as a table, pen, watch, something as neutral as that, or the words can be something like kill, murder, crime. ऐसे भी words आ सकते हैं, war. तो people think कि यार नेगेटिव वर्ड्स है तो कुछ अच्छा लिखूंगा, बट देन यू हैव टू एड्रेस इट. नेगेटिव वर्ड्स है तो तुम्हें वैसे ही लिखना पड़ेगा, बट देन इट शुड नॉट शो अ नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑल्सो. So, there are ways of how you write those things, and there are ways how the psychologist will perceive that. So, this main part is the assessors who are there. They are actually trained by DIPR. So, DIPR is the Defense Institute of Psychological Research, which comes under DRDO. And these assessors are trained by DIPR in such a way that they are trained psychologists. First, of course, they have to be a psychologist, and then they are trained to actually figure out ki what is required for the armed forces. कि आर्म फोर्सेस की क्या साइकोलॉजी है, उस हिसाब से देन दे असेस इट. So this is about the psychology part. The second part is your vacha, what you speak. So there's a extensive personal interview which is generally conducted by an officer who is at least a colonel in the army. तो आप equivalent देख लो कि at the Air Force it might be a group captain, and Navy it can be a captain. Sometimes a very senior wing commander or lieutenant colonel can also be there. So it depends on how the officers are there in the board, or it can be also a brigadier or air commodore or a commodore in the Navy. So the president of the board, basically, whichever SSB is. So it's an interview about your entire life. तो वहां पे तुमको फोर्सेस के बारे में नहीं पूछते हैं. Many people think कि तुम्हारा नॉलेज टेस्ट होगा. तो SSB is not a knowledge test. Of course, they will ask a little bit about कि what do you know, what are the ranks and all. तो बेसिक आपका नॉलेज एंड पैशन चेक करने के लिए. बिकॉज वहां पे पैशन आपका कैसे चेक करेंगे ना. सो दे विल आस्क अ लिटिल अबाउट द फोर्सेस, समथिंग अबाउट द कंट्री, थोड़ा ज्योग्राफी पूछेंगे, जस्ट टू नो कि तुम कितना अवेयर हो. बट apart from that, as I told you, the main qualities which are there, the 15 values, they check that. So they'll ask about your family, they'll ask about your education, your choices which you made, कि engineering क्यों किया, ये क्यों किया, अभी यहाँ पे क्यों आना है, why forces. Then sometimes they also might ask कि why army, why air force, कि why army over air force. So all kind of questions are asked. In my SSB also there were many interesting questions which were asked. So my SSB interview went on for around 1.5 hours. So 1 hour 30 minutes interview गया था. And the interview is designed in such a way कि again you cannot fake it, because होता क्या है कि आप अच्छे से तैयार होके जाते हो, बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कर्नल, तो यू वोंट गो जस्ट लाइक दैट. तो अच्छे से टाई वाई पहन के जाते हो, एकदम मस्त गला वाला पैक करके. एंड देन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट ऑफिसर, एंड देर इज नाइस 1.5-2 meters डिस्टेंस, है ना. तो आप यहाँ बैठे हो, वो वहां बैठे होंगे दूसरे देश में, एंड देयर सो मच डिस्टेंस एंड देयर इज नथिंग इन बिटवीन you and that officer. The officer of course has his own table and all the writing material and everything, but आपके पास कुछ नहीं होगा. There will be just a chair and you will be sitting in that chair. तो आपके आगे कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं है. So even if you move your finger, या फिर आप अपने पैर से थोड़ा नर्वसनेस छुपाने की कोशिश कर रहे हो, nothing doing. Okay, so everything will be seen by that officer. Your body language, your words, of course you have to be loud and clear, because your voice should be heard 1.5-2 meters on that side. So
एवरीथिंग इज चेक्ड, दे स्क्रूटिनाइज यू लाइक एनीथिंग। आपने छोटे से छोटा डिसीजन भी लिया है लाइफ में तो वो पूछेंगे कि आपने फिजिक्स क्यों पढ़ा, वाई डिड यू नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट इन 11th, वाई दैट सब्जेक्ट। तो दे चेक योर कंप्लीट लॉजिक, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, करेज, एवरीथिंग दे चेक। देन दे ऑल्सो चेक कि हाउ सोशली अडेप्टेबल यू आर, दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर फ्रेंड्स। तो मुझे जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई विल शेयर दैट। तो दे हैड आस्क्ड मी कि हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई टुक टू नेम्स, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि फिर बाकी दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो दोज टू पीपल नो कि मैंने उनका नाम लिया था। तो आई टुक टू नेम्स इन दैट इंटरव्यू एंड देन दे सेड कि व्हाई दीज टू आर योर फ्रेंड्स, कि यही दो क्यों अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने बोला कि सर दीज आर द रीजंस एंड like this is why I like this person or like that person. So then they will ask questions ki what are the things which they will not like about you or which they like about you. तो indirectly asking about my strength weakness. तो ठीक है, I handled that, expected है, बताया मैंने। Then sir asked me कि who is a better person out of those two. तो अभी ये तो ट्रिक क्वेश्चन है, आई कैनॉट टेक एनीवन्स नेम, है ना, एंड ऑफ कोर्स बिटवीन फ्रेंड्स यू कैनॉट चूज ऑल्सो। तो आई सेड कि सर बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मी, है ना, आई आई कांट डिटरमाइन कि हु इज अ बेटर फ्रेंड और अ बेटर पर्सन। तो they बोले कि नहीं नहीं, बट देयर वुड बी सम वीकनेस ना, कि इसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। तो बोला कि यस सर, ऑफ कोर्स एवरी पर्सन हैज देयर ओन वीकनेस, नो वन इज परफेक्ट, बट आई कैन नॉट चूज बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो बोला कि देन ही स्टार्टेड स्क्रूटिनाइजिंग मी ऑन दैट। अब मैंने एक बोल दिया है कि आई कांट चूज बिटवीन फ्रेंड्स, तो देन ही विल चेक कि मैं कितना इस चीज को लेकर ऑनेस्ट हूँ, बिकॉज इफ आई चेंज माई वर्डिंग आफ्टर दैट देन हो गया ना, इंटीग्रिटी खत्म वहीं पे। तो देन दे विल स्क्रूटिनाइज अ लॉट कि देन दे आस्क्ड मी कि ओके, इफ यू हैव अ सिचुएशन, लेट्स से यू गेट सिलेक्टेड टुडे, हु विल यू कॉल फर्स्ट, है ना, ऐसा पूछेंगे। और ही सेड कि तुम्हारे लाइफ में कोई दिक्कत है, विथ whom विल यू शेयर। तो मैंने बोला सर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रॉब्लम इट इज, इफ दिस प्रॉब्लम इज ऑफ दिस टाइप देन आई विल शेयर विथ हिम, अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा इमोशनल टाइप है तो आई विल शेयर विथ हर, ऐसे करके। तो लाइक कि अच्छा ओके। देन दे आस्क्ड मी कि ठीक है, तो दोनों में से तुमको क्या लगता है कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा लाइफ में। तो मैंने बोला सर बोथ ऑफ देम विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज ऐसे आई कांट जज, एंड ऑफ कोर्स दे बोथ आर इन डिफरेंट फील्ड, वन इज इन कॉर्पोरेट्स एंड अनदर वन इज इन मेडिकल, तो आई कांट इवन कंपेयर देयर फील्ड्स, है ना। वो अच्छी बात थी कि दोनों अलग फील्ड से थे, तो मुझे आइडिया है। तो मैंने ऐसे बोला कि सर आई कांट कंपेयर देयर फील्ड्स, है ना, दोनों अलग है। तो बोला कि ठीक है। देन ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत स्क्रूटिनाइज किया किया किया, एंड लास्ट में ही सेड क्योंकि चिन्मय एल, यू सेड कि यू रिमेंबर द फोन नंबर्स ऑफ योर फ्रेंड्स, यहाँ पे फोन पड़ा है सामने, आई गिव यू माई फोन, हु विल यू कॉल। एक ही नंबर तुझे लगाना है, नाउ यू कांट से कि आई विल कॉल बोथ, एक साथ दो नहीं लगा सकते। तो मैंने बोला कि सर आई कॉल दिस पर्सन बिकॉज द अदर पर्सन इज लिविंग इन लंडन एंड आई थिंक कि इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं होगा बिकॉज इट वॉज अ लैंडलाइन। तो देन वहां पे देन ही स्टॉप्ड, ही थिंक कि ठीक है यार, अब शायद देयर इज नथिंग लेफ्ट टू आस्क। तो मुझे भी उस टाइम पे नहीं दिमाग में आया कि आई विल गिव सच एन आंसर, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज ट्राइंग टू जस्ट चेक कि कहाँ पे जाके आई विल चेंज माय वर्डिंग, कि नहीं सर ये अच्छा है या वो अच्छी है, विच आई डेंट। एंड बोथ ऑफ देम आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, माई स्कूल बडीज, तो आई कांट कंपेयर बिटवीन देम। तो वहां पे अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम होम, जो बेसिक क्वेश्चंस है यू कैन प्रिपेयर कि वर्ड यू वांट टू ज्वाइन, या फिर तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, व्हाई दिस व्हाई नॉट दैट एंड ऑल दैट इज फाइन। तो ऐसे दे विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन यू, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट एसएसबी इंटरव्यू इज कि दे पुट स्ट्रेस ऑन द पर्सनल पार्ट। वो तुमको आर्मी नॉलेज या कंप्यूटर का नॉलेज पे ज्यादा नहीं स्ट्रेस डालेंगे। नाउ देयर आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट आईटी आल्सो व्हिच दे आस्क्ड मी जस्ट टू चेक कि मैं कितना अच्छा स्टूडेंट था, बट दे विल नॉट स्ट्रेस अबाउट इट अलॉट, बस नॉलेज चेक किया ठीक है, बट दे विल स्ट्रेस अबाउट द पर्सनल पार्ट, क्योंकि वहां पे होता है सबसे ज्यादा चांसेस टू गिव अप, है ना। व्हेन यू आर इन स्ट्रेस एंड समवन आस्क्स यू अ पर्सनल क्वेश्चन, यू माइट falter इन अ वे कि तुम कुछ भी बोल दोगे वहां जाके। So that is something which they check. So so there are a lot of questions, as I said, 40 minutes to minimum chalta hi hai interview, and it can go up to 1 hour, 1 hour 30 minutes. And after this then there is something called as group task. Okay, so in group task there are 9 different tasks, जिसमें से there is a GD, then there is a group planning exercise. They will give you a situation where you have to, there will be a crisis situation, there will be a
सिंपल बेसिक डेली लाइफ प्रॉब्लम, तो ऐसे 4-5 प्रॉब्लम्स होंगे एक सिचुएशन में, एंड एज अ ग्रुप ऑफ मे बी 8 पीपल और 10 पीपल यू विल हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो उसका तुम क्या प्लानिंग रखोगे? सो एक्चुअल में तुम्हें नहीं सॉल्व करना है, बट दे विल आस्क यू कि व्हाट विल बी योर प्लान टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एज क्रिटिकल एज कि देयर इज a train which is going and the train is पलट गई है ट्रेन, एंड it all the um, you can say all the load which it was carrying is on the tracks now, so how will you clear the tracks? तो बहुत ऐसे crisis situations भी होंगे, तो they will ask you how will you plan about that particular task. It's very interesting. उसके बाद you will have to discuss on that कि your personal individual solution is there, plus how will you convince the other people to actually come to a common conclusion, क्योंकि एक ग्रुप में तुम 8 solution लेके नहीं चल सकते. You have to have one particular solution and one final solution to it. तो ये होता है. And then there are ground tasks. So there are different obstacles. You have to clear those obstacles in a group of 8 people or maybe in a group of 4, आधा group करके भी. So those obstacles you have to clear, and in that again your physical stamina and your physical power is not checked. So what is checked is कि तुम कितना दिमाग लगा के उन obstacles को bridge कर सकते हो, and how you can go from the start to the finish line. And along with that you have to carry all the people with you. You have to make sure कि you are not trying to dominate anyone, क्योंकि वो एक group task है, वो एक commanding task नहीं है कि जहाँ पे you have to command, है ना? You have to treat everyone as your friends. So it's not like कि तुम ही एकदम you are the smartest one and you will tell everyone कि ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे. They give you another chance to command also, where the same tasks will be there, but you will be the commander and they will follow you. So there are 9 different tasks. Then there is a lecturate where you have to give a 3-minute speech. तो वहाँ पे again how you speak and all those things are checked. So there are 9 different tasks in groups. So where your group dynamics and everything is checked, how you lead when given a chance, and how you work in a group also. कि जहाँ पे कोई leader नहीं है, but you all are at the same level and you have to complete a task. तो ऐसी चीजें चेक करते हैं ग्रुप टास्क में. And once all these 3 things are done, psychology test, interview, and the group task, then on the last day there is a conference. So in the conference, this is very interesting क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि there will be all the assessors who have assessed you till now, they will be sitting. Apart from then the other assessors of the board, they will be sitting. So around 10, 12 or 15 officers in the uniform are there. So till conference you don't see any officer in the uniform. तो वो अपने civil clothes में होते हैं. But on the conference day everyone will be in their uniform. तो अगर आप एयरफोर्स में हो तो मतलब यू विल सी ऑल ऑफ देम इन योर ब्लूज, नेवी में व्हाइट्स, एंड आर्मी में द ऑलिव ग्रीन. तो सारे ऑफिसर्स वहां बैठे होंगे. द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड विल बी देयर, द डिप्यूटी प्रेसिडेंट विल बी देयर, एंड दे आर एटलीस्ट एट द रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर. मतलब आर्मी में है तो ब्रिगेडियर, एयरफोर्स में है तो एयर कमोडोर, और नेवी में है तो कमोडोर. सो they will be sitting, and then that will be the final place where they will decide कि इसको लेना है कि नहीं लेना है. So all the assessors with the president and the deputy will discuss about you. Of course, you will not be knowing कि क्या बात चल रही है. They will discuss. If you are a doubtful candidate, then again for another maybe 15 minutes, half an hour, 1 hour, they again all together will take another interview. If your decision is done, then they might ask you very simple questions कि खाना कैसा लगा, how was that stay and all. तो उतना करके thank you. So, and after all the 5 days are completed, then on the 5th day they give you the result, कि if you are selected or not. So in case you are selected, then there is another medical test which happens for again 5 days. तो medical test में बहुत सारी चीजें चेक करते हैं. So right from your body structure से लेके सब कुछ ही चेक होता है. I mean those are उसमें I think there's nothing to say because वो एक बहुत ही ऑफिशियल और डॉक्यूमेंटेड चीज है. तो इट्स कंप्लीटली मतलब जो डॉक्टर्स चेक करना है वो चेक करते हैं. एंड आफ्टर दैट देन देयर इज अ मेरिट लिस्ट. तो इतना सब होने के बाद योर रिटर्न स्कोर एंड द एसएसबी स्कोर इज क्लब टुगेदर, and then there is a merit list depending on the vacancies. Then they select those many people and then they join the academy. तो academy में again depending on the type of your entry, the duration of the training is decided. If you are going for OTA, so the training is 1 year. If you are going for AFA, Air Force Academy, if you are going for a ground duty branches, which is non-flying, basically your technical and non-technical,
So your training is for non-technical it is 1 year. For technical and flying it is 1.5 years again. तो टेक्निकल का थोड़ा 3 महीना अभी कम कर दिया है बट जनरल इट्स 1.5 years. And again for Navy, depending on the entry, if you are into IT और whatever general service, तो आपके एंट्री के हिसाब से डिसाइडेड कि आपका ट्रेनिंग कितना होता है. बट जनरली 1 year is the training after graduation, and after NDA it is 4 years. So 3 years NDA plus 1 year whatever in whichever service you are going. तो जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी. तो एनडीए का इट्स बिकॉज एनडीए में दे ऑल्सो गिव यू द ग्रेजुएशन. तो जो 3 साल आपका चल रहा है उस 3 साल में योर ग्रेजुएशन इज बीइंग डन प्लस योर मिलिट्री ट्रेनिंग इज डन. तो जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करते हैं तो एनडीए इज जस्ट यू कैन से कॉलेज वेयर दे आर ट्रेनिंग यू फॉर योर ग्रेजुएशन प्लस मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वहां पे. तो of course all the discipline, and then the training is again completely different ball game because you have to train for maybe 16 or 18 hours a day. Well, not officially. Official schedule is 10 hours, 12 hours, but then all the ragda and all the punishments and all the unofficial things, then it adds up to around 18-20 hours a day. And it's every day. ठीक है, ऐसा नहीं कि once in a blue moon 20 hours. तो जो भी बाहर ये चलता है ना कि 70 आवर वर्क वीक, 90 आवर वर्क वीक एंड ऑल, पीपल स्टार्ट डिबेटिंग अबाउट इट एंड ऑल. तो वहां पे तो 90 आवर्स इज वेरी लेस. इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर 90 आवर्स देन यू आर वेरी लकी बिकॉज 90 आवर्स मतलब डेली कितना हो गया. इफ आई जस्ट नॉट कंसिडर संडे तो 15 आवर्स अ डे. तो विल बी मोर देन हैप्पी कि यू आर गेटिंग 9 आवर्स स्लीप. बट दैट इज नॉट हाउ इट्स डन. 2 to 3 आवर्स स्लीप मैक्सिमम, बिकॉज ऑफकोर्स दे आर ट्रेनिंग यू फॉर अ वॉर. तो वहां पे यू कांट से कि यार ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है. तो वॉर में जाके तो नहीं पूछते कि ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है. सो दैट्स हाउ दे ट्रेन. एंड वंस योर ट्रेनिंग इज completed then you finally pass out as an officer. You get commissioned. So you get the president's commission. तो armed forces is one of those rare I would say प्लेसेस जहाँ पे यू कैन कीप योर रैंक बिफोर योर नेम. मतलब अगर आप जैसे लेफ्टिनेंट हो तो यू कैन से लेफ्टिनेंट शुभम सफाया. So it's not Shubham Safaya, comma lieutenant. So it's always Lieutenant Shubham Safaya. So only the armed forces and a few, you can say, educational degrees are there where you can put it before your name. So once you get the president's commission, then your service starts, depending will be a short service, permanent commission. So this is the entire, I would say, journey of becoming an officer. Once you become officer, तब अलग challenges है. वो I think बहुत अलग है, and that is something which is more interesting, of course. But this is all the preparation which you have to do to become a lieutenant or flying officer or sub lieutenant in the Navy. Perfect. Perfect. Thank you so much, Chinmay. I think soon enough, हमारा, another session is about to close. But one last question that I'll still try to push or slide it in between is Hmm. your move from the armed forces into the education. So, Right. Yeah. So again, I'll keep it very concise because I think the main part is already covered. So when I went through all the journey, so I got recommended in my seventh attempt. तो मैंने जो SSB दिया था, so again, as you mentioned in the start, कि CDS I had cleared 4 times, if I remember correctly, and AFCAT I had cleared 5 times. उल्टा होगा शायद, पता नहीं जो भी. So I had cleared around 9 written exams, and every time I gave the SSB after the exam. So, and 1 or 2 direct entries I also got for the technical entry. तो which is after engineering, depending on your engineering CGPA. तो वहां पर भी ग्रेड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको लगता है कि आपको जंग लड़नी है तो भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर पॉइंटर ठीक नहीं है तो फिर भी आप बाहर हो जाओगे. तो उसके लिए भी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. तो कितना भी कुछ हो जाए तो प्लीज हैव अ गुड पॉइंटर. So I got recommended in my seventh attempt for SSB, and for Air Force then I got recommended in 10th attempt. तो सेवेंथ के बाद एट नाइन्थ वापस नहीं हुआ था, फिर 10th में I got again. तो I thought कि whatever my journey is, and after having though medical reasons in the academy and all that things, तो मुझे लगा कि I have so much experience so I can share it with others. And during COVID, actually, I started teaching maths. And at that time, I was teaching Vedic maths because I had done graduation in Vedic maths as well. So वहाँ पे 6 levels होते हैं, you clear it. And I also went for the national level Vedic maths exam where I got second prize. State level, I got first prize. So Maharashtra, I got first, and then of course in the national level where it was in Bangalore,
तो नेशनल लेवल आई गॉट सेकंड। तो वैदिक मैथ्स ऑल्सो आई स्टार्टेड टीचिंग। तो मुझे लगा कि यार मैथ्स इज समथिंग पीपल, है ना, मतलब पीपल हैव अ वेरी, आई वुड से अनकैनी और अननेसेसरी फियर टुवर्ड्स मैथ्स। इट इज नॉट नीडेड बिकॉज मैथ्स में ऐसा कुछ अलग नहीं है, इट्स जस्ट आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो तो टीचिंग मैंने तब शुरू की थी कोविड में, बिकॉज कुछ काम नहीं था, एग्जाम हो नहीं रहे थे कॉलेज में। तो तब शुरू किया, एंड देन as I told ki I was not interested in corporates also a lot. So I thought ki this is a very good backup for me, where I can share my experience plus I can teach maths also. So and when I started getting results. So I was motivated even more. Ki when the students started getting selected, तो अभी a few of them are in the academy, they are training, कुछ अभी join करेंगे। तो व्हेन दीज थिंग्स हैपन तो और मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार ठीक है, कुछ तो फायदा हो रहा है किसी को। सो इफ नॉट मी देन मे बी अदर्स कैन लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो वो एक था। एंड प्लस आई हैड गिवन जेई एडवांस्ड ऑल्सो, तो आईआईटी के एग्जाम आई हैड क्लियर दैट, बट अगेन वहां पर भी सेम था कि आई वॉज इन द ईएमएल, जो एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट होती है। माई रैंक वॉज नॉट सो गुड, तो आई कुड नॉट गेट आईआईटी। तो एनआईटी भी नहीं मिला था बिकॉज अगेन सेम थिंग कि रैंक इतना अच्छा नहीं था। मुझे एनआईटी नागपुर में, आई वाज गेटिंग माइनिंग एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन माइनिंग और मेटलर्जी, तो आई केम टू वेसिट देन। तो देन दैट वाज आल्सो वन थिंग कि यार वहाँ का भी मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक्सपीरियंस, आई कैन यूज दैट बिकॉज आई गेव मेन्स ट्वाइस, आई गॉट एडवांस ट्वाइस, एंड फॉर्चुनेटली इनफ आई कुड क्लियर इट। तो था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो अभी पता चल गया है कि व्हाट इज द, आई वोंट से मंत्रा और एनीथिंग, बट एटलीस्ट अप्रोच कैसे करना है, सो वो सोच के देन आई थॉट कि आई कैन यूज दिस एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग दीज एग्जाम्स एंड मे बी आई कैन गाइड द फ्यूचर जनरेशन तो नहीं कहूंगा, दोस्त ही है बहुत सारे, तो मेरे दोस्त है बिकॉज सीडीएस एंड एफकैट द ones who are giving are kind of same age group, but the NDA guys of course they are Gen Z, तो वो है थोड़े 5-6 साल छोटे हैं। तो that is how I thought about switching to education field. Perfect. Thank you. Thank you so much, Chinmay. There's a lot that I learned today from all aspects of it. So I really appreciate you sharing all that information. Constantly, I was just listening to it. I didn't even unmute myself because I was like, I don't want to break the thought while you're speaking. So it's really, it was the flow was so smooth that I was continuously listening to that piece. So thank you so much for explaining every process in detail, your shift in detail, like why you preferred this, moving to the education piece, and sharing all the thoughts that you have, your personal experiences about specifically about like the case interview that you were having about for like what were the examples, what actually happened. So I was myself imagining through that situation, Chinmay is sitting on a chair, and then there's everybody on the other side within 1 or 2 meter range. They're sitting on a table, and your legs might be moving. So you visualize and picturized each and every information, that too in detail. I don't know why I'm telling that, because I was just recalling, because there's a lot that has happened, and I kind of imagine myself through the same process. And one of our common friends, I would say, Parikshit, he Picture. yeah, हाँ, बन जाए yeah. बढ़िया। Uh, he told me once that you mentioned a piece wherein if you are a good speaker, and you feel good when you're in an environment कि जहाँ 5-6 लोग होते हैं, तो वहाँ मजा आता है काइंड ऑफ। तो वो परीक्षित ने मुझे एक बार बताया था कि सफाई विल फिट यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि यही होता है। तो माय थॉट, नाउ यू रीआइटरेटेड द सेम थिंग, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। वो पता नहीं, आई थिंक इस बात को भी अब 7-8 8 साल हो ही गए। राइट। But yeah, thank you so much for sharing all the information, and I have nothing to say, and thank you so much for coming on the channel, because I really appreciate you sharing this information. I know my usual channel conversations with people are more about how to get into. I mean, it's technically how to get into. Then I changed the name of the company, which is mostly corporate companies. But now this one is going to be, I think I know the title is obviously like how to get into armed forces. So
there's a lot of information that I also wasn't aware of. I mean, of course, NTA and CDS are very commonly used names in every Indian household as well. अगर कोई जाता नहीं है बट पेपर देते हैं सब लोग, मतलब आई थिंक एवरी सेकंड पर्सन आई नो एनडीए तो दिया ही है सबने. तो Right, right. बट या दैट्स Mm. दैट. Thanks again, Chinmay. Yes, sir. And I think it's all my privilege to be honest, because as I said in the beginning also, कि when Bhaiya told me कि this is what he's planning to kind of do such a video for YouTube. So I was very happy because there are very few people, very honestly, who actually are interested in knowing about it in detail. मतलब वो मन में सबको है, रिस्पेक्ट है, एवरीवन वांट्स टू सम डे, ऐसे रात को सोते वक्त एवरीवन इमेजिन्स कि यार कभी मैं भी जाऊंगा यूनिफॉर्म में टेररिस्ट को मारूंगा एंड ऑल. बट एक्चुअली नोइंग इन डिटेल एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई एम वेरी हैप्पी कि थ्रू योर आई मीन थ्रू दिस चैनल एंड थ्रू दिस आई वुड से थ्रू दिस वीडियो, वट एवर अवेयरनेस वी कैन क्रिएट, अगर 5-10 लोग भी थोड़ा कुछ जान जाए या फिर उनको हेल्प हो जाए, समवन हु इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड एंड मे बी इट हेल्प्स देम टू क्लियर देयर डाउट्स, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. तो थैंक्स टू यू कि यू एक्चुअली बीइंग अ completely corporate guy, you thought of doing such a video. तो इट्स एंड ऑफ कोर्स, जो एज आई सेड कि टीचर का काम है तो बोलते ही रहते हैं हम तो, मतलब दिन भर. तो वी नेवर से नो टू सच थिंग्स, बट या इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर आई वुड से कि एक सीनियर के साथ आई एम सिटिंग एंड आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स. फौज में जाके पता चलता है कि इट्स लाइक यू गाइज केप्ट इट वेरी नॉर्मल फॉर अस, वो जूनियर सीनियर का यू गाइज ट्रीटेड अस लाइक यंगर ब्रदर्स ओनली, है ना. बट फौज में जाके पता चलता है कि वो जूनियर सीनियर के बीच में हाउ इट गोज, एंड if you're not a good junior then you can be screwed like anything. तो so I think it's an absolute honor. तो शुरुआत में I was a little I would say थोड़ा नर्वस था, बट अगेन एज आई सॉ यू, तो इट वाज ऑल वेरी क्लियर. तो थैंक यू भैया फॉर एक्चुअली इनवाइटिंग मी हियर, एंड द आई एम रियली हैप्पी, मतलब और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. आई एम रियली हैप्पी टू शेयर माय व्यूज, and it was a great experience, to be honest. Thank you. Thank you so much, Chinmay. Thank you so much. Your parents have raised you well, so I know you've always been a good junior. I'm not sure how good a senior you are. I'm sure you are really amazing as a senior as well, without a doubt. But definitely. Thank you so much for your time. And I hope you succeed from every corner, especially the teaching part as well. And I know that you're already good at it. You were a good student as well, so I know that as well. So I'm sure you'll excel here as well eventually. Trying to be, sir. Trying to be. Yeah. Thank you. Thanks, Chinmay. Yeah. Thank you, Bhaiya.